Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. I hope you're all well. As you know that my course has now finished, so now I have the tutorials coming for you in English and Urdu. If you do want the course in English, please let me know in the comments below on this video or any other video, and then if there's enough demand I will do the course in English too. Now I've got a really easy everyday look for you. This is for Eid, but it's something that you can do on a daily basis. No eyeshadow and things like that, and then it can be done really quick and easy, literally 10 minutes, and you can get this makeup done. So कोर्स मेरा ख़त्म हो गया, आप सबको पता है, तो जिन्होंने एंजॉय किया, जिन्होंने देखा उसके लिए थैंक यू, लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू. सो आज मैं ईद ट्यूटोरियल लेके आई हूँ, एंड ये बहुत ही आसान 10 मिनट का मेकअप है, सिर्फ कोई भी ये कर सकता है, एंड ये एवरीडे के लिए भी मेकअप है. सो यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ आईब्रोज के साथ. आईब्रोज काफ़ी थिक है मेरे मॉडल के, सो इनको बस मैं सिर्फ थोड़ा सा ये प्रोडक्ट यूज़ करके तो थोड़ा सा इनको ब्रश आउट कर रही हूँ. अब यहाँ पे कोई भी मस्कारा आईब्रोज का यूज़ कर लें. So I'm just using the Benefits product here to just brush out the eyebrows. Now this doesn't really glue down your eyebrows or anything like that, it just lifts them a little bit, but you can use anything you want. So I'm literally just keeping this really easy and simple for you guys in this video. So you're just going to brush them through and then fill out any gaps that you want with your pencil or with your eyebrow shadow or whatever product you like, something quite simple. ब्रश आउट करके आपने अपने आईब्रोज को फिल कर देना है पेंसिल के साथ या मस्कारा के साथ, या जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद है हल्का सा आपने करना है. देन आप देखें इसके एक्स्ट्रा बाल भी हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रोडक्ट लगा के मैंने यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ की है, या कंसीलर यूज़ कर ले, कोई आई बेस की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा सा बस ऊपर नीचे लगा रही हूँ और इसको ब्लेंड कर दूँगी, क्योंकि पूरे आई पे इस दफ़ा मैंने आई शेडो नहीं लगाना. सो मुझे पूरी आई पे कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना प्रोडक्ट हो, तो इसको हल्के हाथ से मैं ब्लेंड कर दूँगी. So underneath the eyes you can see I've still carved out, I've used a foundation, you can use a concealer, whatever you're using that day. You don't need to go with a base. You can see I've only gone underneath the eyes a little bit, covered the extra hair that was there that has not been done, and then literally taking out the rest of the product just on. You can see I'm keeping it under the eyebrow, but then a little bit I'm just going onto the lid, because I'm not going in with a full lid of eye makeup, so there's no need to have that base there or extra product. So literally this is done in like 2 minutes. I avoid this bit on myself, to be honest with you. You don't even have to do it if you don't want to, because this is just an extra step. But if you really want that neatness, if you were going to do this for Eid, then at least obviously these kind of like steps make a huge difference then to the final look as well. It's all about skincare for me, so I'm going in with my Masarrat oil. You can go in with whatever skincare you want. I just think it should be really hydrated, especially if you're going for a simple makeup look. Your skin needs to look good, so I've gone in with this Masarrat oil, which I'm absolutely loving. I hate oils, I don't use them. In many videos I've said that, but this one I'm loving because this is like a dry oil. After that I'm going in with a glow product, again from Masarrat, and then I'm going to go with some eye cream and start my makeup. So क्योंकि ये सिंपल मेकअप है, आई थिंक स्किन केयर अच्छी होनी चाहिए. So मैंने पहले एक ब्यूटी ऑयल यूज़ किया, एंड देन मैंने अभी एक ग्लो सीरम यूज़ कर रही हूँ. ब्यूटी ऑयल मैं एक्चुअली नॉर्मली यूज़ नहीं करती, ये वाला यूज़ किया है क्योंकि ये एक ड्राई ऑयल है एंड ऑयली नहीं होता. एंड उसके बाद मैंने आई क्रीम यूज़ की है, एंड हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बेस अच्छा होना चाहिए, इसलिए आपका ये सिंपल मेकअप एक्चुअली अच्छा लग सकता है आपकी स्किन के ऊपर, क्योंकि आपके अपने स्किन प्रेप सही की हुई है. अब यहाँ पे मैं अपना एल्फ का जो पो फिलर प्राइमर है वो यूज़ कर रही हूँ, इसको सही तरह लगा रही हूँ. So after my skincare, you can see I touched the skin just to see if it felt a little bit tacky and it's ready to be, use another product. So I'm going in with my elf pore filler putty primer, which I really love. So I've just really kind of like rubbed that in. Now I'm using a darker concealer to actually conceal the eye. So I haven't gone in with a color corrector, I've gone in with a concealer that actually matches her skin tone, and I've only used a little bit of product, and with my finger I'm tapping it in, and I'm going to color correct with this. So I'm just going in with a concealer that matches her skin tone. तो यहाँ पे मैंने कंसीलर यूज़ किया है जो मेरे मॉडल का स्किन टोन का है, एंड थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके फिंगर से ही उसको अप्लाई कर रही हूँ एंड उसको प्रेस इन कर रही हूँ. जहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा डार्कनेस है, मैं कलर करेक्टिंग नहीं करी, मैं एक कंसीलर जो उसको मैच करता है उसके साथ कर रही हूँ. ना लाइटिंग की वजह से फाउंडेशन या कलर सही नहीं लगती. जब मैं असल में कर रही होती हूँ मैं हमेशा चेक कर रही होती हूँ, वहाँ पे बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, लेकिन कैमरे पे फिर भी थोड़ा सा लाइट लगता है, लेकिन एवरीथिंग वाज एक्चुअली मैचिंग. सो फिंगर से हल्के हाथ से आपने करना है.
So once I've done that, all I want to do is now is go in with my foundation. I'm using the Revolution IRL foundation, but you can go in whatever you want. This is actually quite a heavy full coverage foundation, I would say, but I'm only using 1 or 2 pumps, and I'm going to use my hands to blend this out with. So I feel warming it up with my finger and just adding this on, I feel, I mean, this is how I actually do my own makeup as well, is I just put a few dots on. I put on a few extra dots here, but on an everyday basis you can do less dots here, and then I just use my hands, and I think the warmth of your fingers and the hand just make everything blend in, and it looks really effortless and flawless, and it's so quick to do. Literally I take 10 minutes to do my makeup in the morning, and it's just very, very natural. So even though the coverage is quite high on this foundation, you can share it out by using less and using your hands to actually blend this out. I love doing this. I think it really gives a nice finish. So यहाँ पे मैंने रेवोल्यूशन की फाउंडेशन यूज़ की है. आप जो मर्जी फाउंडेशन यूज़ कर ले, इसको डॉट्स करके तो मैंने अपने फिंगर के ही साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ. ये मेरा मुझे जो है बेस्ट तरीका लगता है. 2 मिनट में काम हो जाता है, एंड जो आपकी वॉर्म्थ होती है ना फिंगर से, उससे ब्लेंडिंग भी अच्छी हो जाती है. एंड इसका जो स्मूथ इफेक्ट होता है कि ये पूरा चेहरा आपका इतना जल्दी कवर हो जाता है जब आप खुद करते हैं ऐसे मेकअप, एंड लाइट कवरेज आ जाती है. सो नेचुरल सा फिनिश मिलता है, कोई हैवीनेस नहीं होता, क्योंकि केकीनेस नहीं होता. So I have matched up my foundation, and it did match up, but because of the lighting it always looks a little bit lighter. Like I kept switching the lights off and checking as well, and it looked absolutely fine, but on camera, I'm sorry, it does look a little bit lighter, but it's just the way it is. But I do match up, so on camera it just doesn't look that matchy, but so I've used my fingers, and then I'm going in with a beauty blender, a damp beauty blender, to actually just tap away the foundation and just blend it out. So fingers से लगा चुकी हूँ, and then I'm going in, मैंने अपना damp beauty blender से इसकी blending कर रही हूँ. Now you can see my point here is just doing a natural cover makeup, so obviously you will see blemishes, you will see, you know, it's not going to be a perfect makeup, it's not going to be like a flawless, you know, base that's going to last you 12 hours or things like that. This is very light makeup, so you will see imperfections and things like that. Got in with concealer, just a light, slightly lighter colour than what she needed, and not too much product, and I'm just going to buff this out with a brush. So concealer यूज़ कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी, जहाँ चीक्स पे अगर आपको नहीं चाहिए तो सिर्फ अंडर आई पे कर ले, एंड देन एक ब्रश की मदद से इसको टैप करके तो इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ. ज़्यादा कंसीलर नहीं यूज़ किया, इनर एंड आउटर कॉर्नर्स पे किया, एंड दैट्स मोर देन इनफ. So I'm just going to tap this out and blend it out. So it's all about not using a lot of products, but key products in the areas that you need it. Now this will look different on everyone. It might not be enough makeup for some people. It might be more than enough for some people. So, you know, it's just your own skin. And then what I'm doing is I'm just using my MAC powder and setting all the makeup underneath the eyes and on the chin area, and everywhere else I'm actually going to set it very, very loosely with a big powder puff. A big powder brush. And then take that across the face. So basically I'm just powdering in the areas I need. Anywhere else I'm not powdering a lot. आइज़ के नीचे मैंने मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर यूज़ किया है एंड सेट कर दिया मेकअप. बाकी के चेहरे के ऊपर बस लाइटली मैंने थोड़ा सा पाउडरिंग कर दी थी, सो नॉट टू मच पाउडरिंग. यहाँ पे मैंने कंटूर कर रही हूँ, उससे थोड़ा सा हल्के हाथ से कलर लेके आ रही हूँ. एंड ये मैं बहुत रफली अपने ऊपर भी जब करती हूँ ना, काफ़ी रफली मैं करती हूँ, बस कि कलर आ जाए. इट्स नॉट इतना कि मैं बहुत ज़्यादा कंटूरिंग करूँ, बस एक लाइट सा कर देती हूँ. So I'm not being too accurate with my contour here, so I'm just you could go in with a bronzer if you like, but I normally on myself use it as something just to add back a little bit of colour and a little bit of shape, nothing too harsh or anything. Bit of highlighter if you want it, and then go in with your blusher, just make sure everything gets blended out. So फिर मैं थोड़ा सा highlighter लगा के and थोड़ा सा blusher यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, and यहाँ पे सारी फिर blending हो जाएगी. You're just making sure that everything's done and blended nicely. So next I'm just going in with my MAC Studio Fix. It's a powder and it's a dark colour, I think it's NC40, and I'm using this on the eyes, and this is literally just to bronze it up. So use a bronzer or any light brown eyeshadow, and that is it. You just need some colour on your eyes, and then you could add some mascara and your lipstick and you're ready to go. But I just went one step further in this video, but normally I would just do this, or maybe even a bit of blusher on your eyes, and that is it.
कोई भी ब्रॉन्जर लेके आपने आइज़ के ऊपर आप देखें कि कितना रफली मैंने थोड़ा सा बस आइज़ पे कर दिया। बस ये ब्रॉन्जर करके एंड देन आप अपना आई मेकअप मस्कारा लगा के एंड दैट से लिपस्टिक लगा के आप ये आई मेकअप ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे किया, पेंसिल आईलाइनर लगा रही हूँ एंड देन इसी के ऊपर एक ब्रश के साथ थोड़ा सा इसी का शेड का आई शेडो लगा दूँगी एंड इसको बस ब्लेंड कर दूँगी तकरीबन कि मतलब नज़र ही नहीं आता, तो ऐसे ब्लेंड कर दूँगी। So I've added on a brown pencil eyeliner, then I'm going in with a bit of brown eyeshadow on the same bit, and then I've stamped this on, but then I'm winging it out a little bit, and then I go in with a slightly fluffier brush and I just blend it all out. I think a little bit of the video actually got cut out, I didn't even realise. But in the next section you'll see that it's actually blended out quite a bit, but I just used a fluffy brush and I blended it out in the same area outwards, and it looks like, you know, there's not much of the eyeliner left there, so it's really blended out. A little bit on the waterline, and then we curl the lashes. Curling the lashes does make a big difference because we didn't use any false eyelashes here, so I hate using these, so I was so scared to use these on my model, but we were okay. And then a bit of mascara, and I think it's much easier if you're just doing mascara. It's a lot easier when your bride or your client does her own mascara because they know. And then next we went in for a very neutral tone lipstick, like a peachy orangey lipstick, and pretty much this was our look. And then we straightened the hair and that was it, and she's ready to go, and she looked flawless and she looked really pretty on the day. So फिर हमने थोड़ी सी ब्लेंडिंग करके मस्कारा लगा लिया एंड देन लिपस्टिक एंड देन हमने बाल स्ट्रेटन कर दिए थे. सो ये एक नॉर्मल सा सिंपल सा एवरीडे लुक है जो काफ़ी ज़्यादा लड़कियां करती हैं, एंड ईद के लिए भी आप कर सकते हैं थोड़ा सा ड्रेसअप करके. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी एज वेल, माशाल्लाह. सो आई होप आपको ये पसंद आया है. आई हैव गॉट अनदर ट्यूटोरियल कमिंग, एन ईद लुक व्हिच इज़ स्लाइटली मोर हेवियर लुक. हैवियर ईद ट्यूटोरियल भी है, वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों तक लगा दूँगी. सो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट कर देना, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.